नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। हम आज क्लास 7 की महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की 3.5 चैप्टर नंबर और न्यूज एनालिसिस चैप्टर नेम को हम इसका सभी वर्कबुक सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। तो सबसे पहले है मीनिंग्स। आपको मीनिंग्स याद करने होंगे। इसमें कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। इस मीनिंग तो अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको हिंदी बता देंगे। तो आपको एकदम ईजिली सिंपल तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे पेपर में। तो चलिए हम फटाफट से पूरे आंसर को देख लेते हैं। तो आपके वर्कबुक को फिल कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रीड द न्यूज आइटम ए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इश्यूड का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड, और कैंडिडेट्स का है अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर सम जॉब्स। और इन्विजिलेटर्स का मीनिंग्स होता है पीपल हु वॉच स्टूडेंट टेकिंग इन एग्जाम। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु इज द कंडक्टिंग द टेस्ट। सो आंसर है शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड है व्हाई इज दिस न्यूज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो आंसर इज दिस न्यूज इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर टू मेक द रीडर्स एंड अदर्स इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग टू प्रिवेंट malpractice during exams. And next question is read the news item B and answer the question given below. So first question is what is the meaning of the following. तो मोस्ट हाईली पेड का मीनिंग है someone who is paid the highest amount of salary. एंड सेकेंड है रिवील्ड। रिवील्स मीनिंग्स होता है टू मेक समथिंग न्यू नोन टू अदर्स। और थर्ड का है साइन फिल्म का मीनिंग्स है टू एग्री टू डू ए फिल्म बाय सिंगिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम। आंसर है फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड। और सेकेंड है समथिंग ऑन विच ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट बिग बजट। क्वेश्चन नंबर 3 है गेस वाई आंट इज ए बिग बजट मूवी। आंसर है आंट कुड बी ए बिग बजट मूवी एज इट मस्ट बी एन animated film with a lot of sound and visual effect, and also because the makers had robbed in Ritika. And question number next is open-ended questions. Question number first, can you think of other reason for Ritika decision? So answer is other reason for Ritika decision can be that she wanted to take break from this hectic life and focus on her mental health. Question number next is what will be Ritika's reaction to this news? The answer is Ritika's might be surprised to read this news as there may be no truth in it. Question number next is read the news item C and answer the question given below. Guess the meaning of. So mankind का human races. Question number 2 is which word has faces in the news refer to the earth. So the words planet and world in the news refer to the earth. Question number 3 है Proof Hawking wrote about the problems in the Guardians. Why is it given as news in other papers? Answer is although Proof Hawking wrote about the problems in the Guardians, it is given as news in other papers to create awareness about the gravity of the situation and the need to urgent constructive steps to protect our planet. Question number next is read the news item D and answer the question given below. So first question is guess the meaning of. So flock का meaning gather or move in the large number. Second followers people supporting someone whom they believe in the discipline. Second why is there a question mark in the heading.
So answer is there is a question in the heading as the articles leaves in on us to decide or find out the truth about Miri Baba's cure. The question mark indicates that certain whether the powder has the power to cure ailments. Question third है which part of news is reliable, which part may not be reliable, how do we learn that? So answer है a report from Dr. Kornik of Ambegaon Civil Hospital that there was an increase in number of patients in the last few weeks in the probably more reliable. It could be that people out of blind faith went to Miri Baba with their problems and were treated with some unnamed herbal powder. Question number 4 is will Miri Baba's flowers like the news? Answer Miri Baba's and his followers will definitely not like the news. Open-minded question number next is what should you do when you fall ill? Answer is when one falls ill, one must identify the cause of the discomfort and how it can be set right with rest and correct food. Question next is writing skill. So question number A, write a letter to your class teacher principal requesting permission to start a news bulletin in your class school. Use given on page 74 of the textbook. So class monitor standard 7C Shivam Vidyalaya Nashik August 1 24 2024. So the class teacher Standard 7 Shivam Vidyalaya Nashik. Subject permission to start a news bulletin. Madam, on behalf of Standard 7C, I request you to grant you permission to start a news bulletin for our class. It will be one-page bulletin to be published every week. A different group of students will manage the preparation of the bulletin every time. There will be very little expenses involved as the typing and printing will be done in the computer's lab with the permission of the computer teacher. Question number next is write a letter to your class teacher. यहाँ पे योर फेथफुली एंड नेम एंड क्लास लिखना नहीं आया तो मैंने नहीं लिख पाया तो मैं आगे बताती हूँ. So question number B is write a letter to your class teacher principal requesting permission to take old issues of newspaper from the library to the use to the make a cutting news clipping for the bulletin boards. Point given on page number 74 of the textbook. So class monitor standard 7C Shivam Vidyalaya Nashik August 2 2024. So the principal Shivam Vidyalaya Nashik. Subject request to use old newspaper from the library. Respected sir, our class standard 2nd C is planning to set up a bulletin board. We have the permission of our class teachers to complete this project. We will need old issues of newspapers. We request you to permit us to use the newspaper from the library. We will have to cut these to make cuttings, news clipping for our bulletin boards. Therefore, these newspapers cannot be returned to the library. We assure you that we will be very carefully and use the newspapers in the responsible manner. Thank you. Your faithfully, Rupam Das, class monitor, standard 2nd C. So
अभी यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रन।